And we are cutting across live to Tianjin, where Prime Minister Narendra Modi is meeting the Russian President Vladimir Putin for the bilateral meet. And these are the live visuals from there. We can see the Russian contingent sitting alongside the Indian contingent there, with the Indian Prime Minister holding the bilateral with the Russian President, which of course comes at a very crucial moment, as it comes amid the United States' public condemnation of India's oil trade with Russia. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं. Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है. Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है. Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं. Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं. И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है. बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं. हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे. संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा. ये पूरी
मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. И мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо, очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद. And well, that was the high-stakes bilateral between India and Russia after the SCO meeting. The Indian Prime Minister said that he's extremely happy meeting with the Russian President and highlighted that the meet between both the leaders is always memorable. He also said that India and Russia have always been in touch. And he also mentioned the Russian President's travel to India in December this year. The Prime Minister also highlighted the people-to-people ties between India and Russia and further asserted that India always stands by Russia in the face of any adverse situation. This was the high-stakes bilateral between India and Russia, and the timing of the meeting holds significance as it comes amid the United States' public condemnation of India's oil trade with Russia and the US President Donald Trump advisor Peter Navarro clearly saying that accusing New Delhi of funding Putin's war in Ukraine.